Hello dear students, good morning all. I hope you all are fine today. So let us continue with our lesson, that is the motion and measurement of distances. So we had seen about the measurement. How do we measure? Okay, how do we measure various things, and of course without any error, perfect measurement कैसे करना है? So we had seen some rules. So let us turn to the next part of this topic, that is motion. So motion क्या है? To understand that, let us do some activity. Okay, very simple. हमारे आजू बाजू what do you see? What things do you see? You see clock in your room. You see a house. You see a table. You might see a flying bird. You might see the clock. Okay, clock भी देखना है, और clock के अंदर जो hands है, the hands of the clock which are moving, you observe that. You observe a bird flying. You observe the vehicle running, right? Or you observe anything which is in your room, the bed, yourself. So if you see all these things and if you try to categorize this object, make two columns in a table, objects at rest and objects in motion. Motion मतलब जो move हो रहा है, any object which is moving, that you have to write in the object in motion in this column. तो जो object rest पे है, जैसे house, table, clock, bed, yourself, now you are sitting. Okay, then उसके बाद जो मोशन में है, जैसे कि अ फ्लाइंग बर्ड, द हैंड, सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक विच इज़ कंटिन्यूसली मूविंग, राइट? सो यू सी बाय लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट यू कैन डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इट इज़ मूविंग, राइट? तो फिर और एक एक्टिविटी है सिंपल. आपने देखा होगा एंट जो होती है वो किसी इधर उधर घूमती रहती है. ओके, व्हाट यू नीड टू डू, टेक अ पेपर. ओके, यू हैव टू टेक अ पेपर. फिर एक एंट को पेपर पे छोड़ दो, वो एंट इधर उधर जाएगी. ओके, इट विल गो इन द रैंडम मोशन. सो हाउ द एंट इज मूविंग, नो, सो यू टू ट्रैक द पाथ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. और एंड में देखो वो पेंसिल की पाथ ऐसे 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 ऐसे, वेरी रैंडम, इट विल बी वेरी रैंडम, राइट? सो तो ये होगी एंड की. या फिर सेकेंड हैंड जो होता है क्लॉक का, वो दैट विल गो लाइक दिस, इट विल रिपीट इन द सेम पोजिशन, राइट? एंड सेम पोजिशन पे नहीं जाएगी, इट विल गो रैंडमली एनीवेयर. व्हीकल भी जो है वो कैसे जाएगी, इट विल गो ऑन द रोड. ओके, तो इफ़ यू सी देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग इन वेरियस डायरेक्शन. कुछ जो है वो सेम पाथ में मूव हो रहे हैं, कुछ जो है वो रैंडमली मूव हो रहे हैं. So this is all the motion. So what is motion? So motion is something which is related to the change in position of object. जैसे ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, then that object is said to be in motion. It is very simple. What is motion? Whenever the object is in when it is changing the position, then that is motion. Even my hands, they are continuously changing the position. I am in the position as a whole, but in the same position as a whole. But if I look at my hands only, if I think about my hands are moving, so they are in motion. I am not in motion, but the hands are in motion. So that is the difference. Okay, so motion मतलब क्या, जब भी any object is changing the position, then that is in motion. Okay, so there are some types of motion. अभी देखो ना, कुछ ऑब्जेक्ट जो है, व्हीकल जो है वो सीधा जाएगा, बर्ड जो है वो इट विल गो इन रैंडम पोजिशन, एंट विल गो इन रैंडम पोजिशन. या फिर क्लॉक जो है, क्लॉक के जो हैंड्स है, द हैंड्स ऑफ क्लॉक विल गो इन दिस वे, सर्कल. सो डिपेंडिंग ऑन दैट which kind of motion is there, कैसे वो मूव हो रहा है, on the basis of that there are some types of motion. So let us see. So the first type of motion is rectilinear motion. What is it? The rectilinear motion. So what is rectilinear motion? If you have observed the motion of a vehicle which is on the straight road, march past जो है soldiers का, वो एकदम straight होता है, right? या फिर parade, लाइक परेड में जो मार्च पास्ट होता है, दैट इज इन द स्ट्रेट लाइन. ओके, या फिर स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस जो होते हैं वो सीधा जाते हैं. ओके, या फिर थोड़ा सा कर्व. ओके, दैट इज फाइन. बट देन दिस ऑल आर द एग्जाम्पल वेर वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. हाउ आर द ऑब्जेक्ट्स मूविंग? दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट like a vehicle, a march past, or or what we can say. So these all are the very types or the cases where the things are moving in a straight line. What is important? The things are moving in a straight line.
एंड का नहीं, बर्ड का भी नहीं, जो स्ट्रेट लाइन में जाता है, दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर motion. Okay, when the position of object is changing in a straight line, if it is going in straight line, then that is rectilinear motion. The next type of motion is the circular motion, which is very simple. Circle, जो circle में घूम रहा है, that is circular motion. क्या करो, you take a stone, okay, and take a thread. You tie a stone to a thread. Be very careful. Okay, what you need to do, you have to tie that stone very tightly so that it will not lose and it will not go anywhere. Better don't do this, do not do this. Just it is an example कि अगर हमने एक स्टोन लिया और उसको एक स्ट्रिंग को ऐसे टाई कर दिया एंड टेक दैट स्ट्रिंग, स्टोन यहाँ पे है, स्ट्रिंग जस्ट व्हर्ल इट अराउंड, ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना है, राइट. So how it is moving, how the stone is moving, how the string is moving, it is moving in a circle, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, same path. Okay, of course it will follow the same path again and again. या फिर if you see the hands of a clock, if you see the fan, the blades of fan, they all are moving. You can see it in diagram, they are moving, but they all are moving in the same direction, like same path को follow कर रहा है, circular. और path कैसा है, circular है, and इसीलिए this kind of motion is called as circular motion. The distance of the stone or the distance of the clock or the distance of fan वो change नहीं हो रहा है, वो जो सेकेंड हैंड वो वैसे ही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन बस सेम पाथ में इट इज़ मूविंग अराउंड. दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट, लाइक द ब्लेड्स ऑफ फैन, लाइक द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. ओके, एंड ऑल्सो देर आर द व्हील्स, अगर आपने देखा होगा जो व्हील होते हैं व्हीकल के, दैट इज ऑल्सो इन सर्कुलर मोशन. एंड देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स. The blades of the windmill, they are also in circular motion. बहुत सारे examples है, you can find on your own. Okay, जो top होता है वो spin होता है, that is also in the circular motion. And yes, there are many more examples of circular motion. You have to think by yourself, then you will understand the concept very clearly. Okay, the next type of motion is the periodic motion. Okay, अभी periodic motion ऐसा है कि the motion which repeats itself, वो रिपीट होता है, लेकिन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो रिपीट होता है. जैसे कि जो सेकेंड्स हैंड है क्लॉक का, विच इज़ मूविंग, दैट इज अ सर्कुलर मोशन. ओके, दैट वी हैव लर्न, बट अलॉन्ग विथ सर्कुलर मोशन इट इज़ मूविंग व्हेन इट इज़ मेकिंग अ फुल सर्कल. ओके, 12 से लेके निकला तो इट इज़ गोइंग टू द 12, राइट. व्हेन इट इज़ मूविंग दैट टाइम it is moving and it is completing the circle in same time, 1 minute second. Okay, second hand जो है it is completing in 1 minute, minute hand है it is completing its circle in 1 hour, right. So what I mean to say कि when the motion is repeating, it is repeating itself but in equal interval of time. 1 minute हो गया, second hand will again do the same thing, it will again do the same motion, it will again do the same motion. So that is called as the periodic motion. Okay, so this is the periodic motion. An object repeats its motion after some time, this kind of motion is called as the periodic motion. You can see the example of periodic motion in this presentation also. You can see when we strike ये जो होता है the string of the guitar, when we struck the string of the guitar, then it will vibrate like this. Okay, it will vibrate, it will repeat the motion, right, in equal interval of time. So that is the periodic motion. Pendulum होता है, ये देखो, you can see the pendulum, एक string लिए, string and just hold a ball or a stone, you can take a stone or a ball, और उसको बस ऐसे 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 hang करो, right. Yes, also a swing, you can see. Okay, the motion of a swing वो ऐसे 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 repeat होता है, right. और clock, of course I told you about the hands of the clock. So this all motion which are repeating themselves in equal interval of time, that is called as the periodic motion. I hope you are getting these things. Then next, कभी कभी क्या होता है, ये जो सारे मोशन है ना वो एक ही टाइम हमको दिखने मिलते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ मोशन इन सेम थिंग. जैसे कि द बेस्ट एग्जांपल इज स्विंग मशीन. अगर आप देखोगे स्विंग मशीन में उसकी जो नीडल होती है ना, वो नीडल विच इज़ मूविंग अप एंड डाउन, राइट. इफ़ यू सी इट इज गोइंग अप एंड डाउन. दैट
रिपीट हो रहा है ना वो इक्वल इंटरवल में, सर्कुलर नहीं है, सीधा सीधा नहीं जा रहा है, इट इज़ नॉट द रेक्टिलिनियर बट इट इज़ बिकॉज इट इज़ रिपीटिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम मोशन रिपीट हो रहा है of up and down, so that is the, what is that, yes it is the periodic motion. The motion of needle is periodic motion. और wheel देखो, wheel जो गोल घूमता है, राइट, वो व्हील क्या है, वो भी इक्वली टाइम में घूमता है, तो वो भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है. एंड ऑल्सो क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है, सेम अगेन एंड अगेन वही पाथ में फॉलो, इट इज़ गोइंग इन द सेम पाथ, हेंस दैट इज़ कॉल्ड एज द पीरियोडिक मोशन. तो मशीन में अगर आप देखोगे एज अ होल, यू वुड सी टू काइंड्स ऑफ मोशन, अ पीरियोडिक मोशन ऑफ द नीडल एंड द सर्कुलर मोशन ऑफ इट्स व्हील. So एक ही ऑब्जेक्ट में, yes it is possible that in an object, in a single object there are various types of motion that is possible. Then let us see the next motion of a ball. ball जब रोल होता है ना ग्राउंड पे, तो you can observe, देखो बॉल कैसे जा रहा है, गोल 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 घूम रहा है, राइट. Of course it is going away, it is going ahead, लेकिन how it is going, okay first we will focus on ahead. See it is moving ahead, you see वो कैसे स्ट्रेट लाइन में आगे जा रहा है, ओके पाथ में नहीं, लेकिन इट इज़ गोइंग ऐसे ऐसे जिगजैग तो नहीं जा रहा है, ओके इट इज़ गोइंग इन स्ट्रेट लाइन, हेंस इट्स अ काइंड ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, राइट. जब मोशन मतलब द रोलिंग ऑफ बॉल, व्हेन द बॉल इज रोलिंग इन फ्रंट, दैट इज कॉल्ड, व्हेन इट इज रोलिंग ऑन ग्राउंड, दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन. और ऑल्सो अलॉन्ग विद रोलिंग इट इज ऑल्सो रोटेटिंग, गोल 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 घूम रहा है, सो दैट इज द सर्कुलर मोशन, यू कैन सी. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोशन, okay, that is the circular motion and also there is the rectilinear motion. So that is the combination of more than one motions, right. So that you can see various objects around you and you can get the type of motion it involves. So we saw that motion, what is motion, it is just the change in position of an object with time. When the object is changing its position with time, that is called as the motion. So the change in position, of course वो हम कैसे कि position change कैसे हो रही है, of course distance से measure कर सकते हैं, कितना position change किया, okay कार ने कितना position change किया, तो वो कितना distance चलेगी इस गांव से उस गांव तक, जामनगर to राजकोट या to अहमदाबाद. So we can just see, we can measure that, we have to measure with the help of distance. So also the movement of snail on the ground we can measure, butterfly जो है वो when it is flying, or a river is flowing, aeroplane is moving from one place to other, the blood which is moving in our body, yes this all are in motion, they all are changing the position. You see the earth is moving around sun, moon is rotating around the earth, this all are changing their position with time, hence this all are in motion, right. So you can see various examples around you of the motion and you can categorize, we know some of the type, which type you don't know leave it, but जो भी categorize कर सकते हो, जो types हमने सीखे, depending on that you can categorize the things and you will understand the concept better. So here we end this chapter. I hope you have understood all the aspects, all the topics of this chapter. And by the next period you just take care, be safe at home. Okay, goodbye.